Everyone in the village used to make fun of Percy. He did very silly things and got into trouble constantly. गांव में हर कोई पर्सी का मजाक उड़ाया करता था। इसने बहुत अहमकाना हरकतें की और लगातार मुसीबत में पड़ गया। Once he had to carry a large basket of butter to Mrs. Goodwin. He carried it in a basket on his head. एक बार उसे मिसेस गुडविन के पास मक्खन की एक बड़ी टोकरी लेकर जाना पड़ा। इसने इसे एक टोकरी में अपने सर पर उठाया। On the way he kept wondering why he was sweating so much. When he put the basket down, he found it was empty. रास्ते में वो सोचता रहा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। जब उसने टोकरी नीचे रखी तो उसे खाली पाया। The sun had melted the butter completely and had poured down his face in streams. He got a sound scolding from Mrs. Goodwin. सूरज ने मक्खन को पूरी तरह पिघला दिया था और उसके चेहरे पर धारों में बहा दिया था। मिसेस गुडविन ने इसे बहुत बुरी तरह से डांटा। However, since he spent most of the day loafing around, someone was sure to find some work for him always. ताहम, चूंकि इसने दिन का बेशतर हिस्सा घूमने फिरने में गुजारा, इसलिए यकीनी था कि कोई न कोई इसके लिए हमेशा कोई न कोई काम ढूंढ ही लेगा। One day, Mrs. Rogers sent him to fetch a pig that Farmer Lane had kept for her. Percy soon returned, but instead of a pig, he was leading Farmer Lane himself. एक दिन मिसेस रॉजर्स ने उसे एक सूअर लाने के लिए भेजा जो फार्मर लेन ने इसके लिए रखा था। पर्सी जल्द ही वापस आ गया, लेकिन सूअर की बजाय वो खुद फार्मर लेन की क़ियादत कर रहा था। The farmer was looking furious. Mrs. Rogers chased Percy with a broom right out of her house. Percy ran and ran till he was clear of the village. किसान गुस्से में नजर आ रहा था। मिसेस रॉजर्स ने अपने घर के बाहर झाड़ू लेकर पर्सी का पीछा किया। पर्सी दौड़ता रहा यहाँ तक कि वो गांव से बाहर निकल गया। He decided it was best for him to stay away till things had cooled down a bit. He walked along till he was tired. उसने फैसला किया कि इसके लिए इस वक्त तक दूर रहना सबसे अच्छा है जब तक कि चीजें थोड़ी ठंडी नहीं हो जाती। वो चलता रहा यहाँ तक कि वो थक गया। Then he sat down in the shade of a tree to rest and soon fell asleep. On the tree lived a little imp who could do magical things. फिर आराम करने के लिए वो एक दरख्त के साए में बैठ गया और जल्द ही सो गया। दरख्त पर एक छोटा भूत रहता था जो जादुई चीजें कर सकता था। But he was very naughty. He saw Percy sleeping under the tree and wondered what new mischief he could create. लेकिन वो बहुत शरारती था। इसने पर्सी को दरख्त के नीचे सोते हुए देखा और सोचा कि वो कौन सी नई शरारत कर सकता है। Suddenly, the princess' carriage appeared along the road. The imp decided that he would play a trick on the princess. अचानक शहजादी की गाड़ी सड़क के किनारे दिखाई दी। छोटे भूत ने फैसला किया कि वो शहजादी पर एक चाल चलेगा। Making himself invisible, he showered a little sparkling magic dust on the princess. अपने आप को पोशीदा बनाते हुए, उसने शहजादी पर हल्की सी चमकती हुई जादुई धूल बरसाई। She became entranced by everything around her and asked the coachman to stop the carriage. अपने आसपास की हर चीज से घबरा गई और कोचमैन से गाड़ी रोकने को कहा। She peeped out and saw Mercy sleeping under the tree and thought he looked like a prince. इसने बाहर झांका और पर्सी को दरख्त के नीचे सोते हुए देखा और सोचा कि वो शहजादे की तरह लग रहा है। She told the coachman and the footman to pick him up and put him in the carriage. They obeyed her promptly. उसने कोचवान और पैदल चलने वालों से कहा कि वो उसे उठाकर गाड़ी में बिठा दे। उन्होंने फौरन उसकी बात मान ली।
The carriage went off to the palace, with the imp sitting gleefully on the roof. Percy woke up in the palace. With the princess giving him lots of care, he began to believe he was actually a handsome prince. गाड़ी महल की तरफ चली गई। छोटा भूत छत पर खुशी से बैठा था। पर्सी महल में जाग उठा। शहजादी ने इसकी बहुत देखभाल की। इसे यकीन होने लगा कि वो वाकई एक खूबसूरत शहजादा है। The princess decided to marry him, and the king and the queen had a great ball to celebrate the wedding. शहजादी ने इससे शादी करने का फैसला किया और बादशाह और मलिका के पास शादी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा मौका था। Everyone in the kingdom was invited. Imagine the surprise of Mrs. Goodwin and Mrs. Rogers when they saw the princess and Percy the prince. ममलकत में सबको मदऊ किया गया था। मिसेस गुडविन और मिसेस रॉजर्स की हैरत का तसव्वुर करें जब उन्होंने शहजादी और पर्सी शहजादे को देखा। Since he didn't have to work anymore, there's no trouble in the palace. चूंकि इससे और काम नहीं करना पड़ा, इसलिए महल में कोई परेशानी नहीं।